That is for the low energy reaction. Low energy means around 10 mega electron volt per nucleon. That is the energy of the means energy which is available before the reaction. Okay, that is kinetic energy actually. Then we have a conservation of total angular momentum, means total angular momentum, that is sum plus or spin plus orbital, that should be equal before and after the reaction. And then parity also. Parity is should remain same before and after the reaction. Parity should not change. अगर आपकी parity जो भी है odd है या even है, total net parity means आपके projectile की parity क्या है, आपके टारगेट की पैरिटी क्या है, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर अगर कोई आपके पास एंगुलर मोमेंटम है प्रोजेक्टाइल का विद रिस्पेक्ट टू योर टारगेट, then you have to consider that parity also, that will be minus 1 to the power of L अगर कोई orbital angular momentum है, so that you have to find the total parity before the reaction and total parity after the reaction, that should be same. Then you have a conservation of one more factor which is a new thing, बट एग्जाम में मुझे लगता है कि सिर्फ उसको हम बच्चों को सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए देते हैं, फाइंड दिस वैल्यू फॉर अ गिवन न्यूक्लियाई और फॉर गिवन पार्टिकल. हम उसे डिटेल में कहीं डिस्कस नहीं करते हैं जब भी हम कंजर्वेशन लॉ न्यूक्लियर रिएक्शंस को लेकर डिस्कस करते हैं. सो दैट इज अ न्यू कंजर्वेशन प्रिंसिपल, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन. आइसोस्पिन, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ स्पिन. आपने एक स्पिन देखा हुआ है पहले से, आपने ऑर्बिटल angular momentum में देखा. This is a new, this is an isospin. Sometime it is called isotropic spin. तो ये एक न्यू क्वांटिटी है, इसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. फटाफट हम इक्वेशन डिस्कस करते हैं और इक्वेशन के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं. हाउ वी डिफाइन दिस, आपको स्पिन के लिए आपको पता है कि एस यूज करते हैं, ऑर्बिटल के लिए एल यूज करते हैं और टोटल के लिए हम यूज करते हैं जे, एंड जे इज एल प्लस एस. ठीक है, सो दिस इज अ न्यू quantity. This is not anything from these three. तो ये थोड़ा different है. Isospin इसका नाम है, but this is a different thing. It is concerned with the charge actually. But अभी वो ज़्यादा clear नहीं होगा आपको. Last chapter में जब हम particle physics करेंगे, there we will have a detailed formula for this one and how we calculate this. तो अभी सिर्फ एक सिर्फ hint ले लो कि this is related to spin only. And why we introduce this particular isospin, that is for electromagnetic interaction. The proton and neutron are different, means one have a charge, one don't have a charge, so they are different thing, so their spin will be treated as a different thing. But for a nuclear force they both are same thing, means for a nuclear forces, means the strong forces, it is nucleon, and nucleon is divided into two parts, that is either it can become a proton or it can become a neutron. So nucleon is a single entity and that can present itself as a proton or it can present itself as a neutron when you are considering a न्यूक्लियर फोर्सेस. तो न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोटॉन भी वही चीज है और न्यूट्रॉन भी वही चीज है, उनके चार्ज से कोई न्यूक्लियर फोर्स को कोई इफेक्ट पड़ता नहीं. इट इज हार्डली हैविंग एनी इफेक्ट. हमने एक जब फोर्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी था तो देयर वी हैव सेड इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, सो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है कि प्रोटॉन का चार्ज कितना है, न्यूट्रॉन का नहीं है, तो फोर्स में कोई डिफरेंस है. नो, the force, strong forces will behave in a same way, even if it is between proton, even if it is between neutron, even if it is between proton and neutron. So that is why the spin they have half. तो इस half को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा. दोनों की वैल्यू स्पिन हाफ है, बट न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए इस हाफ के लिए हमें थोड़ा सा नोटेशन देना पड़ेगा. मींस वी हैव टू assign certain different thing for identifying that there is a proton and there is a neutron. तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के लिए उसने क्या किया, we have put a new notation for this particular thing and that is called as isospin. उसको हम T से डिनोट करते हैं. isospin को हम डिनोट करते हैं T से, not S, not L, not J, not S या I, कुछ ऐसा नहीं है, it is T. So T is denoted as a isospin vector. So it's a new vector and its value is equal to, just hold on. Okay, so the T is given as this value.
टी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आपको लग रहा हो कि क्या चल रहा है, इसके बाद हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो आपके लिए थोड़ा सा समझ में आएगा। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। अगर नहीं भी आते तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिफाइन कर, दिस इज आइसोस्पिन वैल्यू and this is a quantum number for your isospin vector. So T is a quantum number for your isospin vector and T is the total vector value. In the same, जैसे हमारे पास S हम डिफाइन करते थे, L डिफाइन करते थे और J डिफाइन करते थे, फिर हमारे पास एक कंपोनेंट आता था SZ आता था, LZ आता था और JZ आता था. In the same sense here also we have TZ, but to differentiate from these quantity we introduce a new thing that is T3 component. हम Z नहीं कहते उसे, होता तो वही है, मतलब X Y Z component है, बट यहाँ पे मैं उसे 1 2 3 T1 T2 and T3. तो आपको T3 से, T3 is nothing but it is something like a Z component of T vector. TZ is MTH bar. तो उसकी वैल्यू है MT. MT is again a quantum number and that is a projection, how much percentage you are projecting along your experimental vector, that is your Z direction or third direction. Okay, so these two things, अब इस फॉर्मूले से अगर याद रखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आइसोस्पिन निकालना. एटॉमिक या न्यूक्लियर केसेस के लिए तो इजी है, बट पार्टिकल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ एमटी एंड टी, बट वी हैव अदर फॉर्मूला दैट वी यूज नॉर्मली फॉर टी. दिस इज फॉर अ सिंगल न्यूक्लियन. एक न्यूक्लियन के लिए अगर आप सब डिफाइन करते हो ना, तो आपने ये फॉर्मूले डिफाइन किए. बट सिंगल न्यूक्लियन वी हार्डली हैव. हाइड्रोजन एटम के अलावा उस न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियन होता है. बाकी जितने भी आपके पास न्यूक्लियस हैं, आप हाइड्रोजन को छोड़ करके एनी न्यूक्लियस यू पिक अप, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ न्यूक्लियस. हाइड्रोजन को तो हम न्यूक्लियस भी नहीं कहते हैं सही से कि उसके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं, दैट इज ओनली अ प्रोटॉन. सो न्यूक्लियस का पिक्चर ही कब आएगा, व्हेन यू हैव अ टू न्यूक्लियन. तो जब तक आपके पास दो न्यूक्लियन नहीं आते, मींस दे विल इंटरैक्ट. अगर सिंगल प्रोटॉन है तो प्रोटॉन डज नॉट हैव अ स्ट्रांग फोर्सेस, किसके साथ वो इंटरैक्ट करेगा. तो इट डोंट रिक्वायर टू हैव एनी आइसोस्पिन काइंड ऑफ vector for a proton within a hydrogen atom. But जब एक बार हीलियम या न्यूट्रॉन आ जाता है, means if you have more than one nucleon, then you have a strong forces and then you define these things कि आपको T के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि T की वैल्यू क्या है. तो ये तो हमने सिंगल एंटिटी के लिए डिफाइन किया है. Now we have a definition for if you have a couples of nucleon, then we denote by capital T. जैसे हमने J के लिए कहा था ना, J एक स्मॉल J होता था, फिर उसके बाद हम नॉर्मली कैपिटल J लिखते हैं. बट तो more or less it is the same value. J, this is the total. This is something which is a total isospin. Sorry, this is isospin. So total isospin will be T, which is actually sum of T1 plus T2 plus T3 and so on. जैसे आप नॉर्मली करते हो एडिशन, जो आप J के लिए फॉलो करते हो, सिमिलर काइंड ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन यू हैव टू फॉलो फॉर द ऑल द T's. तो एक न्यूक्लियन है, उसका अपना T1 होगा, दूसरे का T2 होगा, तीसरे का T3 होगा, and they will align themselves or they will have certain angle and you will add up to a net total isospin of the nucleus. तो न्यूक्लियस कहने का मीनिंग ही है कि आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियन से डील करना है. अगर एक ही न्यूक्लियन है, यू कैनॉट से दैट इज अ न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस का डेफिनेशन ही फॉलो नहीं कर सकता है, बिकॉज यू हैव अ सिंगल एंड यू डोंट हैव अ स्ट्रांग फोर्स. जब तक दो न्यूक्लियन नहीं होंगे तब तक स्ट्रांग फोर्स आपके पिक्चर में आएगा नहीं, और स्ट्रांग फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा तो यू नीड टू डोंट नीड टू डिफाइन अ न्यू वेक्टर फॉर अ स्पिन वैल्यू. Okay, so if T is the total isospin for any nucleus having couples of nucleon, then it is defined as T1 plus T2, and if you have more, you can have several other, and they can add up. जैसे आपका J add होता है ना, J1 means total J क्या होता है, J1 plus J2 होता है, या J1 minus J2 भी हो सकता है, और any number between these two number भी हो सकता है. So we also define in this way that T1 minus T2, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बिटवीन एनी नंबर विद अ यूनिट ऑफ वन डिफरेंस, यानी कोई भी नंबर हो सकता है. आपकी टी की वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करे कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करो और उसको ऐड करो, उनके बीच में जो भी वैल्यू वन वन यूनिट के डिफरेंस में आ रही है, एनी पॉसिबल वैल्यू कैन बी गिवन टू द वैल्यू ऑफ टोटल isospin of any nucleus. T3, which is actually
third component of your total isospin vector for a given nucleus. So T3 थोड़ा सा easy है formula, T1 T2 में नहीं भी बताओ, T3 is easier to calculate and normally T3 हम calculate करते हैं फिर हम T निकालते हैं, so it is Z minus N. So this you know very well. ये किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं. Using those number you can find the third component of your isospin, total isospin vector for any given nucleus. तो अगर मैं न्यूट्रॉन के लिए निकालने के लिए बोलूं कि T3 की वैल्यू क्या होगी, तो you can easily find because you have two nucleons. आपके पास न्यूट्रॉन में कितने हैं, दो हैं. कितने न्यूट्रॉन में? You have proton and you may have another न्यूट्रॉन ही नहीं, कोई और भी ऐसा न्यूक्लियस हो सकता है जिसमें दोनों प्रोटॉन हो. हम दो न्यूक्लियन के केस के लिए हम डिस्कस करते हैं कि उसकी T3 और T की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. Then you can have a nucleus having one proton and one neutron, and then you have a nucleus where you have one neutron. This is just arrangement. This is just arrangement. And let me just take one red one. This is a proton proton, proton neutron, and neutron proton. This is another way of saying the arrangement. इस arrangement से different है, बस ये ध्यान रखना. जैसे digital में आप चलते हैं ना 1 0 and 0 1, they both are different things in this way. So we have a collection of two nucleon. Two nucleon में क्या हो सकता है? We can have neutron, we can have neutron neutron, we can have neutron proton, we can have proton neutron, and we can have proton proton also. तो हमारे पास 4 different possibilities होती हैं इनकी arrangement की. If you have two nucleon, और जैसे जैसे आप nucleon के नंबर बढ़ाते जाओगे, आपकी number of possibility increase होती है. Sorry, this is proton. आपकी possibilities भी increase होगी. तो उनके addition में भी आपके पास T1, T2, 3, T4 and so on. You will have these numbers. So you can easily calculate what is the value of T3. तीनों केसेस में, चारों केसेस में जरा बताओ, जल्दी बताओ T3 की वैल्यू क्या होगी, जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग. For this arrangement, what is T3? This is proton, this is a proton, this is a proton, and this is a proton, and these are neutrons. So what is the value of T3? Half into 1. Z 2 minus कितने हैं? 1. 2 minus 2 है ना? 0. 2 minus 0. So that will be half. What about this one? Oh, so sorry, not half. This is 2 now. So this is 1. Plus 1 actually. What is this one? 0. So this is half, and we have one proton and one neutron. So that will be 0. For this one also you will have one proton, one neutron. That is also 0. And for this also you have 0 minus 2. So that will be minus 1. ठीक है, तो हमारे पास 4 डिफरेंट नंबर्स आ गए. एक तो -1 आ गया, एक +1 आ गया, एक 0 आ गया, दूसरा भी 0 आ गया. But we can identify what is the value of T for these 3 cases या 4 cases. 3 मैं बार-बार कह रहा हूँ, बट 3 इसलिए भी आपको क्लियर हो जाए क्यों मैं बार-बार 3 को एक साथ ला रहा हूँ और बाकी को एक जगह लेके आ रहा हूँ. You can say that जो T की वैल्यू होती है ना, अगर हम T3 की वैल्यू अगर हमारी आ गई तो T की वैल्यू that is roughly, even if you calculate using this formula, ये formula आपके पास है. हम प्रोटॉन के लिए T की वैल्यू हाफ डिफाइन करते हैं और न्यूट्रॉन के लिए T की वैल्यू माइनस हाफ डिफाइन करते हैं. ये डिफाइंड है. This is not exactly we know what is the value of isospin for these two, but we can define for proton it is plus half and for neutron it is minus half. तो हम ये T की वैल्यू इंडिविजुअल मींस नेसेंट प्रोटॉन और नेसेंट न्यूट्रॉन की ये वैल्यू हम डिफाइन करते हैं. जब हम आइसोट्रोपिक के स्पिन को डिफाइन करते हैं तो वी आल्सो डिफाइन दैट फॉर प्रोटॉन इट विल बी कॉल्ड एज +1 isospin value, and for neutron it will be a -1 half isospin value. So using these two value you can easily calculate what is the value of T. पहले केस के लिए T क्या आएगा? फर्स्ट केस के लिए T क्या आएगा? 1. You have two protons, both are having half. T1 and T2 ऐड हो करके they will give me 1. माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो 0 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो अभी 0 को हम साइड रखते हैं, 1 आ गया. नेक्स्ट केस में we have half minus half, so that will be what? That will be, it can be 0 हो सकता है ना, हाफ ये रहा और माइनस हाफ ये रहा. इट कैन बी 0. अगर दोनों अलाइंड हैं पैरेलल तो इट विल गिव मी 0, और अगर एंटी पैरेलल अलाइंड है तो इट कैन गिव मी +1 also. This is what the new thing you
में नो कि थोड़ा सा हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे मैंने उसको जीरो को डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे मैंने जीरो को डिफाइन किया, प्लस वन ले लिया. तो you will get clear कि what is the difference we are saying about. For this case I will define this as a zero. प्लस तो नहीं, it will be zero क्योंकि मैंने प्लस हाफ और माइनस हाफ को पैरेलल रखा है, तो पैरेलल रखने पे दोनों ऐड होंगे तो that will give me zero. Next, both are neutrons, so both दोनों के पास माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ will give me minus one, or you can say it is plus one. You will not say minus one, you will say plus one, सॉरी प्लस वन. थोड़ा सा ये अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि T3 पे फोकस करो. T3 इजिली निकाल सकते हो, और T की वैल्यू जो होती है ना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ T3 होती है. इतना भी याद कर लोगे फॉर्मूला तो चलेगा आपके लिए. ये फॉर्मूला अगर नहीं भी आप ऐड करते हो तो ऐड, क्योंकि एडिशन में आपके पास वेरिएशन है. दे कैन ऐड अप इन पैरेलल, दे कैन ऐड अप इन एंटी पैरेलल मोड, और दे कैन बी इन एनी वे, इट कैन ऐड अप इन दैट वे आल्सो. सो दैट कैन गिव यू एनी नंबर. सो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, बट कौन सा वैल्यू लेगा वी डोंट नो एग्जैक्टली. So we find three states, this one, and this one. They all have t equal to 1, and T3 is minus 1, 0, and plus 1. And this one is the next, which is having t equal to 0, and T3 is also equal to 0. This is what the last outcome of this thing. After calculating T3, you can club three different states as a one state. So this is called triplet state of two nucleon system for a isotropic spin. Triplet state, you have a three different arrangement for T3 value, and there is one state when we have only one arrangement which is possible. What is the value of T for any given value of T3? अगर -1 है, 0 है, +1 है, तो highest value जो होगा T3 का मॉडुलस वैल्यू, that will be your T value. अगर मेरे पास कोई T3 की वैल्यू आती है +3/2, then next number 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, -3/2 से स्टार्ट करते हैं. -3/2, if you add 1, what you will get? -3/2 + 1 कितना होगा? -3/2 + 1. half, minus half. -1/2. Next number will be, again add plus 1 करो उसमें, so that will be half. Again you add, that will be 3/2. So you have four different possibility of T3 if T value is 3/2. इसमें हाईएस्ट वैल्यू T की क्या है, मतलब T3 के हाईएस्ट वैल्यू क्या है? मॉडुलस वैल्यू 3/2 है. 3/2 is the highest value, so that is the value of T. Means any nucleus, if T is equal to 3/2, so it can have four different arrangement of its nucleons. तो फोर डिफरेंट अरेंजमेंट से आपके फोर डिफरेंट वेव फंक्शन आएंगे, और ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी जब आप पार्टिकल फिजिक्स करोगे. अभी हम न्यूक्लियस के सेंस में कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि न्यूक्लियन स्टेट की बात कर रहे हैं. व्हेन यू डू विद द पार्टिकल फिजिक्स, देन यू विल डिफाइन दीस क्वांटिटी बाय द चार्ज वैल्यू. तो फिर आप Z अगर ध्यान से देखोगे ना इस फॉर्मूले में, तो हमने एक चार्ज का नंबर लिया है, एक अनचार्ज का नंबर लिया, तो हम इसको चार्ज से डिफाइन करते हैं बाद में. तो दिस T3 आइसोट्रोपिक स्पिन इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ चार्ज विद इन द न्यूक्लियस. कितना चार्ज है उसके बारे में वो रिफ्लेक्शन दे रहा है, उसके अंदर चार्ज कितना स्टोर्ड है. इनडायरेक्ट वे में, इट इज नॉट इन अ डायरेक्ट वे, बट इट इज इनडायरेक्ट. इट इज सेइंग अस कि हाउ मच चार्ज इज देयर, एंड एट लो एनर्जी charge has to be conserved. Even at high energy, charge is hardly violated. There are experiments, there are certain decay in which charge is violated, and sometimes parity is violated. So that is it is a famous CPT violation. If anybody know what is CPT violation, charge parity and time reversal. तो आप अगर टाइम रिवर्सल करते हो तो रिएक्शन डिफरेंट दिखेगा, वायलेट करता है वो. पैरिटी भी वायलेट हो जाता है उस डीके में, चार्ज भी वायलेट हो जाता है. मींस चार्ज इज नॉट सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन. So this is something which is concerned with the charge conservation. At low energy पे charge conservation feasible है, possible है, it is not going to be lost. तो आपके पास charge conservation follow होगा, but इसको थोड़ा isotropic spin के सेंस में हम कहते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा. But once you calculate T3, then it is easier to calculate what is the value of T. T is the nothing but the highest possible value of your T3 for any given state. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एंड करते हैं और फटाफट हम जाते हैं. We go in this one,
the energy conservation, and we will try to solve the nuclear reaction by two different method. एक हम पहले करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और एक हम करेंगे लैब फ्रेम में। तो दोनों फ्रेम में आपका एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे फॉलो होगा और आपके पास इनकमिंग जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसकी एनर्जी आपको नोन होती है, जो आपने टारगेट चूज किया है वो भी आपको नोन होता है, जो प्रोजेक्टाइल जनरेट हो रहा है, ये सॉरी जो आउटगोइंग पार्टिकल है और जो आपका टारगेट न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है, यू नीड टू नो दोज प्रॉपर्टीज। मीन्स पहला एम क्या होता है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ बी पार्टिकल, जो आउटगोइंग पार्टिकल उसकी एनर्जी क्या है और उसका मोमेंटम क्या है। अगर ये दो चीजें हमें पता चल जाती हैं फिर हम बाकी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहला एम है हमारा हाउ टू फाइंड द एनर्जी। तो एनर्जी फाइंड करने के लिए दिस इज अ सिंपल कोलिजन प्रिंसिपल। आपका कोलाइड हो रहे हैं दो सिस्टम और कोलाइड होने पे यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो आपको दोनों केसेस लेकर के चलना पड़ेगा। एंड collision principle, if you have done in classical or mechanics book chapters, that center of mass frame is easier to handle rather than your lab frame। अगर आपने किया होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना आपने, दो बॉल्स कोलाइड होते हैं, हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, किसी एंगल पे कोलिजन कर रहे हैं, सो देयर आर डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपके पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम थोड़ा सा इजी होता है when you deal with the collision, और लैब फ्रेम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको सिर्फ इतनी नॉलेज मिलती है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द आफ्टर द कोलिजन और आफ्टर द रिएक्शन, आपके पास रिएक्शन के बाद क्या एनर्जी होगा और लीनियर मोमेंटम क्या होगा। बट लैब फ्रेम में जब उसको आप एनालिसिस करते हो तो यू ऑल्सो गेट द पिक्चर कि हाउ मेनी पार्टिकल्स विल बी इजेक्टेड और गेटिंग स्कैटर्ड एट व्हाट एंगल। तो एंगुलर वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल, आउटगोइंग पार्टिकल का एक एंगुलर वेरिएशन का इफेक्ट भी आपको पता चलता है व्हेन यू डू द लैब फ्रेम एनालिसिस। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम का करते हैं और उसके बाद हम लैब फ्रेम पे आएंगे। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमारा मेन इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आउटगोइंग पार्टिकल। अगर इनकमिंग का मुझे पता है तो, मासेस भी मुझे पता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अच्छा एक सेकंड, स्क्रीन शेयर बंद हो गया, लैपटॉप का नेट चला गया, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। दो मिनट वेट करना बेटा, 2 मिनट वेट। Okay, so it is back. Rejoin device. रिज्वाइन तो हो गया बट ये क्या दिखा रहा है, रिजॉइनिंग पे क्लिक ही नहीं हो रहा है। इसलिए कॉलेज से आकर के ना क्लास लेना इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज रियली हेक्टिक थिंग। और आपके ना लैब्स के लिए कॉलेज खुलने वाले हैं, आपको लैब में आके शायद क्लासेस स्टार्ट हो जाए, बट दैट विल बी, लाइब्रेरी भी खुल रहा है कॉलेज की, सो यू कैन हैव योर सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट वीक से सर क्या? मतलब होपफुली आपके पास एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करना है, कंसेंट आपको देना है, उसके बाद फिर Sir, any idea about the date?
Dates actually that will depend which lab we have, means that will depend on the lab dates, means Monday भी हो सकता है, Tuesday भी हो सकता है, ये कि आप जितनी भी physical lab No हो sir, रही है. like हाँ. starting का date. अच्छा, starting मे बी आई थिंक कोशिश तो हुई आज से ही, बहुत सारे डिपार्टमेंट आज से खुल भी गए कोशिश तो आज से ही थी, बट आई थिंक एज पर यूनिवर्सिटी इट इज आई थिंक 16 September. So there is a 10 days for getting collection of all the data कि किस बच्चे को वैक्सीन लग गया है, किसको नहीं लगा है, पेरेंट का कंसेंट मिल सकता है. और थोड़ा सा ये है कि लोकल स्टूडेंट के लिए ही है, नॉट फॉर आउटसाइडर, थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं उसको, बिकॉज बाहर वाले आएंगे तो फिर हॉस्टल नहीं है और फिर जाने का भी नहीं होगा कि अगर कोई दिक्कत होती तो फटाफट जाएं कैसे कहीं. तो लोकल स्टूडेंट के लिए तो फिर भी है, बट आउटसाइडर के लिए थोड़ा सा भी अवॉइडेबल है. Okay, so just let me share the page again. Yes. Okay, so let us start with the center of mass frame. Center of mass frame में we have the projectile which is having a velocity VA in lab frame and it is having a mass MA. So हमने ये note कर लिया that it is moving towards the your target. Target आपका है green color का, which is here, and that is a nucleus, heavy nucleus, having a mass x and having a velocity vx. In lab frame it is 0. तो रेस्ट में है आपका टारगेट. उसके बाद आपके पास outgoing particle which is of blue color and that is getting out here mb and having a velocity vb in lab frame. That is also a light particle which is after the reaction, and you can have another blue particle which is your my and which is within the, means within the target. That is we will not consider much of detail of this my, but we will have only the initial energy and the final energy. We can also consider कि it will have a certain motion. अपने इस point से थोड़ा सा move तो करेगा ही, किसी न किसी recoil में जाएगा ही. मीन्स अगर आपका सेंटर, ये तो आपका लैब फ्रेम में सारा पिक्चर हो गया. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर पिक्चर देखते हो तो दिस इज MA which is moving towards and MX is also moving towards सेंटर ऑफ मास. दोनों सेंटर ऑफ मास में, क्योंकि दिस इज नॉट रेस्ट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम. अगर लैब फ्रेम में रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये मूविंग है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज समवेयर बिटवीन दीज टू एंटिटी. एंड आफ्टर द रिएक्शन इफ योर say this is your MB particle, then this will be your MY particle. तो उसमें भी हमारे पास थोड़ा सा मोशन होगा कि दोनों आउटपुट अपने सेंटर ऑफ मास को लीव करके away from the center they are moving. तो reaction से पहले they are moving towards the center of mass and after the reaction they are moving away from the center of mass. So this is in the center of mass frame and these are the picture in the lab frame. So EL is the energy in the lab frame, because this is at rest and we will only consider the kinetic energy, we will not consider the rest mass energy. So this is half MA VAL, this is lab frame square. So this is the initial energy which is available for the reaction. This is the initial kinetic energy which is available for the reaction to happen. और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास सेंटर ऑफ मास में हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं. तो एक बार मुझे जरा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ. सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा ना, बीच में इन दोनों के. It will be more towards the heavy nuclei. So what is the velocity of the center of mass? Does it is stationary or it is moving when this particle is moving? वो move करेगा या center of mass move करेगा, वो भी stationary होगा if you are dealing in a center of mass frame? स्टेशनरी होगा सर. नहीं, ध्यान से देखो. अच्छा, वेलोसिटी कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी? ये पार्टिकल तो रेस्ट पे है ना, ठीक है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी तो मूव कर रहा है ना. अगर सेंटर ऑफ मास पे भी अगर हम हैं तो this is moving, one is not moving, then center of mass is slowly it is moving towards this particle.
दिस न्यूक्लियस mx, वो वेलोसिटी कितनी होगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? इफ ma is having certain velocity, mx is having zero velocity, then what is the velocity of center of mass which is between these two? सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब मोमेंटम विल बी बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन दैट विल बी roughly zero. Both are coming towards the center of mass. But center of mass itself means if you are in lab frame, let us वो थोड़ा confusion हो रहा है कि center of चलो lab frame बताओ center of mass का क्या velocity होगा? lab frame में अगर बैठे हो तो आपके पास center of mass की velocity क्या होगी? Not in center of mass, sorry, that I have asked कि center of mass में क्या? Center of mass तो stationary होगा, but center of mass velocity in lab frame, what is that value is? Sir, ma into va divided by ma plus mx. Yes, क्योंकि इसकी velocity है नहीं, तो that will be only with the va L, which is lab frame, divided by ma plus mx. This is center of velocity, means velocity of the center of mass in the lab frame. ठीक है, center of mass में obviously that is stationary, but in lab frame it will have certain velocity. So in lab frame only, let us first find what is center of mass velocity of A. Velocity of A in center of mass frame. ये तो लैब फ्रेम का सारा पिक्चर हो गया. अब हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ए की वेलोसिटी क्या होगी? यानी पार्टिकल की लैब फ्रेम में तो VAL है, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल ए की वेलोसिटी क्या होगी? It is moving in this direction, this is moving in this direction, so they will subtract each other. So it will be VAL minus VCM. यही होगा अगर आप Yes, sir. सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो तो बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो अगर आपने सेंटर ऑफ मास पे अगर आप उसको स्टेशनरी अज्यूम करते हो, you have to subtract that much of velocity by which this point is moving. So you are subtracting here, so that will be equal to how much it is mx, है ना, VCM माइनस करोगे और VAL रख रहे हो, तो you will multiply this and minus this, so you are left with this one, ma plus mx. यही होगा. And velocity of x particle. Now the target is not stationary. In center of mass frame, the target is not stationary. It will have certain velocity towards the center of mass. How much that value is? It will be Sir, minus negative center of mass VC. का velocity. Yes. So that will be minus ma VAL upon ma plus mx. ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो जिसको हम कहेंगे इनिशियल. सो बिफोर द रिएक्शन हाउ मच एनर्जी इज देयर इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, नॉट इन लैब फ्रेम. लैब फ्रेम में एनर्जी ये, लैब फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी इट इज ऑलरेडी देयर. सेंटर ऑफ मास में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दैट इज half of ma multiplied with the velocity of this in center of mass frame, so that will be mx square VAL square divided by ma plus mx whole square, half mv square, plus because this is also moving, अब target भी आपका move कर रहा है in center of mass frame, so it will also have certain kinetic energy in center of mass frame, so that will be half mx ma square VAL square divided by ma plus mx whole square. यहाँ तक ठीक है? So we Yes, can sir. take half common, और अगर ma और mx भी कॉमन ले लेते हो तो यू आर लेफ्ट विद mx प्लस ma, बिकॉज VAL स्क्वायर भी कॉमन है, तो एक नीचे है एक ऊपर है, तो दैट विल कैंसिल आउट, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली ma mx VAL whole square divided by ma plus mx. So this is something like a reduced mass. So half reduced mass into
initial lab frame velocity of the A particle. So this is something like that. अब इसको थोड़ा सा और modify कर सकते हैं because half ma VAL square is actually EL. So you can write as mx divided by ma plus mx EL. So this is the kinetic energy initially in center of mass frame. ठीक है यहाँ तक calculation? Is it okay? Yes, sir. Okay. Now we can calculate स्क्रीन शेयरिंग अभी आ रही है आपके पास? Yes, sir. आ रही है. अभी भी? Yes, sir. क्योंकि मेरी लैपटॉप में नेट नहीं दिखा रहा अभी ये. Okay. So now what we can do, we can calculate the kinetic energy after the reaction. Before the reaction हमने calculate कर लिया कि आपके पास कितना available energy है, kinetic energy in center of mass frame. अभी हम सारा calculation जो कर रहे हैं center of mass frame के respect में कर रहे हैं. Now we will calculate how much the energy after the reaction. So in lab frame, let me just write the kinetic energy in center of mass frame we have calculated. Let me use the different color pen so that it will be visible कि हाँ भी कहाँ पे हमने before the reaction का calculation किया है, कहाँ पे हमने after the reaction का calculation किया है. Okay. So after the reaction, the kinetic energy, that is final kinetic energy final in center of mass. एक हमारा initial था वो ये रहा kinetic energy final. How much this value will be? कितना होगा ये? Half outgoing particle आपका B particle है. Velocity of B particle in center of mass square plus half my, which is your target which has converted into a y nucleus. जो आपका x target था y nucleus में convert हो गया, that having a recoil after the reaction. So my and vy, and that is in center of mass frame square. यही होगा और कुछ होगा? यही होगा ना? Yes, ऊपर sir. हमारा देखो लैब फ्रेम में क्यों दिख रहा था? क्योंकि हमारे पास लैब फ्रेम की वैल्यू गिवन थी. अभी हमारे पास लैब फ्रेम की कोई वैल्यू गिवन नहीं है. वी ओनली हैव द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के टर्म में लिखा हुआ है. वहां पे हमारा VAL आ रहा था ना. ये सारा क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास को VAL यानी लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था. हम एक्चुअली कर रहे थे यही काम. यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास ही लिखा था, बट दैट वाज ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ योर लैब फ्रेम. So can we replace this value by something else so that you have a not two terms, a single term? It means you can you replace VB by VY और VY by Y को replace कर दो. मतलब Y ऐसे कर लो, VY by VB, इसको replace करो. Y को हम B से कर सकते हैं, Y की velocity B के respect में. And which equation we will use? Can we replace VY by VB, and which equation we can use or what condition we can use? Sir, momentum conservation. Yes, good. Momentum conservation says that MB
VB center of mass must be equal to My Vy center of mass. That's all. So if you replace that, means half MB VB center of mass whole square plus half My Vy will be My Vy को replace करना था, तो MB square VB center of mass whole square divided by My whole square. So that will be equal to half MB VB center of mass whole square plus half My get cancelled out. So you're left with MB whole square VB center of mass divided by My. So this can be written as half MB VB center of mass whole square. You can take common and 1 plus MB divided by My. है ना? Simple है? Okay. Now the final, we have calculated the kinetic energy final and kinetic energy initial. Now we have to equate these two, but they will not be equal. They will be equal by certain other number. The kinetic energy final in center of mass must be equal to the kinetic energy initial center of mass plus something, and that something is Q value. If there is any mass defect occur during the reaction, so that energy will be also released, and that the release energy will be given to the outgoing particle. ठीक है, कोई भी रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन स्कैटरिंग होता है और इलास्टिक होता है, then these two energy will be same, then there is no difference, दोनों की kinetic energy initial और final same होगी. But if the reaction happen in other way, that is inelastic, inelastic means the incoming particle, the projectile particle has entered into the nucleus and it has done certain thing and the mass has reduced, means reactant का mass ज़्यादा है and now the product have a lesser mass. So lesser mass means there is a mass defect, some of the mass has been gone, that mass has been converted into energy and that energy will go to the outgoing particle. Some part go to the recoil nucleus and some part or more of the part goes to the outgoing particle. So this is the general condition for any reaction. हो सकता है किसी रिएक्शन में Q की वैल्यू 0 तो आपका दोनों इक्वेट हो जाएगा, अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है then this will be bigger. If Q is negative, that is also possible. आपका मास इंक्रीज हो गया, कोई एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो there is a lesser energy at the for the outgoing particle. Agreed? Agreed? Yes, sir. Yes, sir. है ना, Q की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. Both could be possible. Zero है तो then these two number will be equal. There is no big calculation you have to do. But if you have a positive, then this will have a higher energy. आपका जो outgoing particle है, आपके projectile से उसके पास ज़्यादा energy होगी, उसकी kinetic energy. And if Q is negative, then outgoing particle will be a slower particle with respect to your projectile. अब अगर ये equation मैंने दे दिया है, तो you can easily equate these two and you can find what is the kinetic energy of the outgoing particle. Outgoing particle का ये रहा kinetic energy, इस number को आपने नीचे लेके जाना है और ये plus ये से divide कर देना है. This is what you have to do. Finally means if you are finding TB, जो हमारा main aim है कि हमारा जो outgoing particle उसकी kinetic energy कितनी है. अगर हमें initial conditions known है तो it is simple, that is mx el, वो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ma plus mx, ये वाला आ गया, plus q and whole divided by 1 plus mb divided by my. So this is the outgoing particle kinetic energy. What are the things you have to know? You have to know the initial energy of the incoming particle, that is a projectile. You have to know the masses, all the things which is involved, यानी a particle का mass क्या है, x का क्या है, y का क्या है, b का क्या है, वो masses आपको पता होना चाहिए, और आपका q कितना रिलीज हो रहा है, यानी mass defect पता होना चाहिए. तो अगर ये सारी चीजें पता है तो you can easily calculate what is the value of kinetic energy of the outgoing particle. Clear? Is it clear?
इस डेरिवेशन में कोई बहुत ट्रिकी कुछ नहीं था, इट वाज सो सिंपल। Yes, sir. तो ऐसा तो नहीं था कि बहुत डिफरेंस से इक्वेशन है कुछ। अगर किसी को डाउट है तो अभी बताओ, फिर हम लैब फ्रेम के कैलकुलेशन पे जा रहे हैं, विच इज मच मोर नॉट टफ बट इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। नॉट टफ, टफ तो कुछ है ही नहीं, मतलब it is algebra only, but it is more complicated. So if you are done with this one, that our aim is to find what is the kinetic energy of outgoing particle, and what we have done, we have found the kinetic energy in the lab frame. ये तो lab frame का energy हो गया ना, अब center of mass का नहीं है। क्या क्या, हाँ सॉरी सॉरी, हम के VCM के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास में, बट यू कैन इजीली फाइंड इन द लैब फ्रेम आल्सो, दैट इज नॉट अ बिग। एक बार आपका सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ गया, फिर आप लैब फ्रेम के लिए निकाल सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। बट ऑब्वियसली जब तक एम वाई के बारे में कुछ नहीं पता है तब तक आप सेंटर ऑफ मास से हट नहीं पाओगे। यानी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल, दैट इज दिस वन। आपको इनिशियल पता होना चाहिए जो ईएल है, लैब फ्रेम एनर्जी कितनी है पार्टिकल की, कोई मास डिफेक्ट है तो क्यू कितना रिलीज हुआ, पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, एंड मासेस आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन इजीली फाइंड। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज we won't be able to complete today, but let me just share the file to you. Huh. Okay. So now we will do the detailed derivation, and that will give us the idea how the particle are angular, in the angular sense how they are distributed after the reaction. एक बार जब reaction होता है तो किसी angle पे कितने particle emit होंगे, how we can find, and what energy that particle will have. अगर हम 0 डिग्री पे बैठे हुए हैं रिएक्शन के, कि मींस इनकमिंग पार्टिकल बीम के डायरेक्शन में ही हमने अपना डिटेक्टर लेके बैठे हुए हैं, तो व्हाट इज द energy, kinetic energy of the B particle which is being emitted after the reaction. If we are sitting at the 90 degree, then what is the energy of that particle? If we are sitting at the 60 degree, then what is the energy of that particle, and how much particle we are receiving at different point. So this is this you will get the idea once you do the lab frame analysis of the any nuclear reaction. जो आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाला हमने जो डेरिवेशन किया अभी, वो पार्टिकल फिजिक्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमारे पास इजी होता है उस कैलकुलेशन को डील करना, बट जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन यानी हैवी एटम्स या हैवी न्यूक्लियर के साथ कोई रिएक्शन कर रहे हैं, देन वी हैव टू गो फॉर द लैब फ्रेम, देन वी कैन नॉट रिलाई ऑन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एम वाई की इंफॉर्मेशन हमें मिस हो जाती है। सेंटर ऑफ मास में अगर हम हैवी न्यूक्लियर से डील कर रहे हैं तो हमारे पास कैसा होगा टारगेट, टारगेट कोई सॉलिड होगा। अगर कोई सॉलिड है तो एम वाई का कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगा, कितना रिकॉइल हुआ, किधर मूव कर गया, वो ऊपर गया नीचे गया, वी डोंट नो। बट अगर हम पार्टिकल फिजिक्स में डील कर रहे हैं यानी पार्टिकल बिल्कुल फ्री है, तो फ्री पार्टिकल वेयर दे आर गोइंग आफ्टर द रिएक्शन वी कैन इजीली प्रिडिक्ट, एंड वी कैन सी दैट आल्सो। जब रिएक्शन होता है यानी दो प्रोटॉन अगर कोलाइड कर रहे हैं, तो आफ्टर दैट वेयर दे आर गोइंग वी कैन इजीली कैलकुलेट। देयर इज नो सॉलिड सिस्टम कि वहां पे जाके वो स्टॉप हो गया। तो सेंटर ऑफ मास फ्लेम इज मोर usable in the particle physics, and lab frame is more better way of analysis in the heavy nuclear reactions. Okay, so let me draw the diagram and then we will start the derivation. Again, red one will be your projectile. Let me just make it a little bit down because we have to use the angle also here. So this is MA and having a momentum PA. So it has a momentum PA. And then we have a green one, which is a heavy nuclei, and it is being there in the solid form. तो कोई एक शीट है हमारे पास, उस शीट के अंदर हमारे पास ये mx पार्टिकल है, और mx is stationary, so that will be 0, जैसे हमने पिछले केस में लिया था। लैब फ्रेम में सारा लिख रहे हैं, अभी हम लैब फ्रेम में डील कर रहे हैं। And then we have a blue particle which is coming out after the reaction, and which is a light MB having PB momentum, and that is coming in this particular direction.
And you also have another blue particle, which is your heavy atom, and that is within the target only, and that is having a certain momentum in this direction. Okay, so इसको हम लिख देते हैं my, and it has py also. So py is non-zero, my is non-zero, pb is non-zero, mb is non-zero, mx is non-zero, px is zero, ma is non-zero, and pa is a non-zero number. So we have 8 quantity out of 8. One is zero, rest are there. And now you can do the detailing with your directions. So this angle is your theta, which is very important, scattering angle, or you can say after at which angle does the bead particle is coming out. And this one is phi. इसको हम phi कहेंगे, दिए वाला angle means recoil nucleus किस angle पे गया with respect to your direct beam direction. So that is phi, and this is a direct beam direction. This is direct beam direction, जिसको हम direct beam direction कहते हैं. This number is not equal to 0 just after reaction. तो जैसे ही आपका रिएक्शन होता है, for a moment recoil is there. When the recoil is there, it means it has consumed certain energy, it has a certain momentum after the reaction. हो सकता है after a microsecond that is stop. आपका जो my है that goes to a means it is within the target, तो थोड़ा सा distance वो move करता है, hardly you can say few angstrom it will move, or say few micrometer it moves, and then it stop. तो ultimately finally उसके पास कोई momentum नहीं है, but just after the reaction it was having certain non-zero momentum. So that is why we are taking py is non-zero just after the reaction. ये भी कह सकते हो आप कि सर बाद में तो उसके पास मोमेंटम है ही नहीं, बट हमें देखना है कब, just after the reaction. ठीक है, okay, so now we will write the energy conservation. So the energy conservation says that mxc square plus tx, which is 0, but अभी हम लिख रहे हैं उसे, यानी kinetic energy of this particle and the any rest mass energy of this particle, that is target, plus mac square plus ta, that is rest mass energy of ma and kinetic energy of ma, this particle, a particle projectile, and that must be equal to my c square plus ty. Just after the reaction it was having certain momentum, so ty is not 0, so ty is there. My c square will be there, that is the rest mass energy, and plus mb c square and plus tb. तो हमारे पास ये सारे टर्म्स आ गए. This is the energy conservation, rest mass energy and your kinetic energy. So just you have added. So this is your total energy before the reaction, and it has to be conserved even after the reaction. Okay. पिछले केस में हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिया था, तो हमारे पास Q वैल्यू जनरेट हो रहा था. यहाँ पे हमने Q वैल्यू का भी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट कर दिया, मासेस ले लिए ना, तो मासेस को जब इंक्लूड कर दिया तो देयर Q वैल्यू इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रिएक्शन. दैट इज व्हाई द बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन दे आर सेम, यानी हमने T और Q दोनों की इंफॉर्मेशन बिफोर एंड T एंड Q आफ्टर दोनों की रखी है. पिछले केस में हमने सिर्फ T और T की इंफॉर्मेशन रखी थी, इसलिए हमारे पास फाइनल आंसर में Q का वैल्यू ऐड हो रहा था. सो नाउ वी कैन introduce a Q value, which is mxc square plus mac square minus mbc square minus myc square. So this we define as a Q value of the reaction. जितना mass decrease हुआ after the reaction, that is your mass defect and that will be released. तो इसके बेसिस पे नॉर्मली हम हमारे पास दो डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन होते हैं. अगर Q की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है तो हम उसको कहते हैं एक्सोअर्जिक रिएक्शन. जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, दिस इज एक्सोअर्जिक रिएक्शन. If it is negative, then it is called as endoergic, means energy will be used by the endoergic. एंडोथर्मिक होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है ना, उसी तरीके से ये एक्सोअर्जिक
और एंडोर्जिक. So energy is released, zero भी, अगर zero भी होगा तो it will be called as exoergic reaction and endoergic. So it is consuming, it is releasing, it is consuming, it is releasing. यानी B particle की energy increase भी हो सकती है और decrease भी हो सकती है, आपके mass defect पे वो depend करेगा. When you say this number as Q value, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो ये मैंने पिक करके इधर लेके आ गया, ये भी मैं पिक करके इधर लेके आ गया, तो मेरे पास मासेस एक तरफ हो गया और वी कैन take these kinetic energy to other side. So we will write as dy plus tb and minus dA, and here I will write tx is 0. तो Q वैल्यू आपकी इसके इक्वल भी है, यानी total kinetic energy at the end of the reaction minus the total kinetic energy before the reaction, that is equal to Q value. पिछला इक्वेशन चेक करो, ये लिखा था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस Q इज द जो सेंटर ऑफ मास में हमने लिखा था लास्ट इक्वेशन. ठीक है, सो नथिंग इज रॉन्ग, वी आर राइटिंग एवरीथिंग इज एज पर कंजर्वेशन लॉ. नाउ वी विल राइट द, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, नाउ वी विल राइट द, अगर इसको मैं x पे ले लेता हूँ, लेट अस से दिस इज x एंड दिस इज y. ठीक है, तो इनिशियली आपका p जो है ना सारा x डायरेक्शन में, और y जब जनरेट हो रहा है वो xy प्लेन में हो रहा है, और जो b जनरेट हो रहा है वो भी xy प्लेन में हो रहा है. तो इसके पास जो मोमेंटम है, यू कैन मींस यू कैन ऑलवेज व्हाट यू कॉल दिस एज, you can take the component in both the direction, you can add them. So that will be how you have to write the momentum conservation. You have to write in the direction wise, you cannot write a single term, you have to write in the direction wise. So what you can write, that PA, which is the initial momentum, and that is in x direction. मैं x यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ अलग से, क्योंकि हमने यहाँ पे x इसके लिए यूज कर लिया है, तो बार बार हम x यूज नहीं करेंगे. x y हम अज्यूम करेंगे that is in x direction. जो मैंने PA लिखा है that is in x direction. So PB cos of theta plus PY cos of phi. ठीक है, लिख सकते हैं ना, जो मोमेंटम कंजर्वेशन आपका x डायरेक्शन में होगा. This component will be cosine of this factor, and this component is also equal to, means this will also have a cosine factor in this, so we are adding these two, so that will be equal to PA. Then you have y direction also. Y direction में PA के पास कुछ भी नहीं था, that was 0. Before the reaction there was no y direction momentum, so this will be PB sine of theta minus PY sine of phi. Is it okay? ठीक है, yes or no? Yes or no? फिर इसके आगे में बढ़ना है. Yes, sir. Okay. Now what we can do, our aim is, अब हमारे पास देखो अननोन क्वांटिटी बहुत सारे हैं. हमारे पास PB अननोन है, PY अननोन है, थीटा अननोन है, फाई अननोन है. तो हमारे पास 4 डिफरेंट क्वांटिटी अननोन है. इवन हमारे पास हाँ इतने ही अननोन है, बिकॉज वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TA, बिकॉज हमने उसको प्रोड्यूस किया था, टारगेट हमने चूज किया था, तो दैट वी नो. So these things we know, and Q is, we can easily calculate mass defect क्या है, अगर हमारा outgoing particle detect हो जाती है कि उसका mass कितना है, तो we can calculate the Q value also. Even Q is at present, even Q is unknown. So there are 4 quantity which is unknown: theta, phi, and PY and PB. So 4 quantity is unknown, and we only have 3 equations. तो possibility तो है नहीं solution का. हमारे पास 4 unknown है और 3 equation है, तो we don't have the solution. But we don't require PY and phi. इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है. We don't want to know what is the value. हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि PY क्या है, किस रिकॉइल किस डायरेक्शन में गया, कैसे गया, हम उसे एलिमिनेट मींस why we are not interested in these things, that actually what we are detecting, we are detecting only the B particle. तो B particle किस
डायरेक्शन में आ रहा है, कितनी एनर्जी सर है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो वी विल ट्राई टू फाइंड दिस, वी नो ओनली लेफ्ट विथ ओनली 2 unknowns and 3 equations, so that we can do, but we have to eliminate these 2 things. हमें अपने इक्वेशन से, ये q नहीं है, ये phi है, ध्यान रखना ये phi है. दिस इज नॉट q, कंफ्यूज मत होना, q मैंने ऐसे लिखा है और phi मैंने जब भी लिख रहा हूँ तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है. तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना, q और phi. सो these we have to eliminate from these 3 इक्वेशन. एलिमिनेट करके हमें सिर्फ PA, PB और थीटा के टर्म्स में सब कुछ लिखना है. तो वी विल डू दैट वन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम वैसे तो P में भी इक्वेशंस कर सकते हैं और फाइनली हम उसको एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, बट आई विल रिप्लेस द टर्म्स हियर ओनली. मैं क्या करूंगा, यहीं पे टर्म्स को पुट करूंगा. तो फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन वी हैव टू स्क्वायर देम एंड add them. Square of first and square of second, and you have to add them. या पहले हम क्या करते हैं कि चलो यही करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, पहले हम इस इक्वेशन को पहले स्क्वायर करके लिखते हैं. तो दिस विल बी PA स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू PB स्क्वायर cos of theta स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर cos of phi स्क्वायर प्लस 2PB PY cos of theta and cos of phi and 0, एंड इसको भी स्क्वायर करेंगे, PB स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस PY स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस, बिकॉज माइनस इज देयर, 2PB PY साइन थीटा एंड साइन फाई एंड ऐड देम. So what you will get PA square, that is equal to PB square cos square theta sin square theta. So we are left only with PB square. So cos square phi sin square phi, we are left with PY square plus 2PB P cos of theta. And what I will do, I will replace this cos phi from this equation using this equation. cos phi की वैल्यू जरा इस इक्वेशन को देख के बताओ क्या लिखेंगे. cos phi in terms of other things. क्या होगा, PA minus PB cos of theta and divided by PY. Okay, is it okay? Two PB PY sin theta, and we will replace sin phi by the second equation, which is this one. So that will be equal to PB sin theta divided by PB sin theta. ये प्लस हो जाएगा ना इधर जाके, तो सिर्फ आपको sin phi नीचे यानी PY लिखना है, PY. Is it okay? ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन ट्रिकी है, लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बस ये मेन एम है. सो PB स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर प्लस, नाउ यू मल्टीप्लाई द टू टर्म्स, मींस देयर इज अ माइनस ब्रैकेट में 2 टर्म है, तो दोनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो इसको. सो यू विल गेट 2 PY कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद PA PB cos of theta and minus 2 times PB square. ठीक है,
and cos square theta. Is it okay? Is it okay? Yes, Is sir. it okay? Chalo. Now तो at least you are live. Minus live means so online session वाला live. PB P अच्छा सॉरी PY भी यहाँ कैंसिल हो गया तो PY लिखने की जरूरत नहीं. साइन स्क्वायर. ओके PB इज ऑलरेडी देयर तो PB स्क्वायर आ गया. साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब हमारा इक्वेशन सिंपल आ गया. PB स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर प्लस 2PA PB cos of theta, and these two will give me what? Minus 2 PB square. That's all. minus 2 ही आएगा ना या minus 4 आएगा? कहीं 4 तो नहीं था. मैंने 4 चलो ठीक है 2 ही रहने दो. अभी फिलहाल 2 ही रहने देते हैं. ठीक है यहाँ तक. हाँ या ना? Yes, sir. अब ये देख लो PB स्क्वायर यहाँ पे एक ये रहा और 2 ये रहे तो माइनस में आ गया. यानी PY स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर माइनस 2PA Yes, sir. PB cos of Plus theta. आएगा. हाँ बोलो. अच्छा प्लस है. सॉरी दिस इज प्लस. Yes. दिस इज प्लस. ओके Plus ये प्लस ही चल रहा है ना. ये माइनस हो जाएगा. दिस इज PB स्क्वायर इज देयर एंड माइनस 2PB स्क्वायर सो दैट विल बी PB दिस वन. ठीक है. सो आई विल राइट हियर ओनली और नीचे नहीं जाऊंगा. मेरा फाइनल इक्वेशन ये हो गया ना तो इसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ. तो नाउ आई कैन राइट PY स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर माइनस 2PA PB cos of theta. ठीक है. तो यानी PY भी हमारा आ गया. अब PY का भी इक्वेशन अगर आ गया है PA और PB के टर्म में और cos theta के टर्म में तो वी कैन रिप्लेस PY आल्सो इफ देयर इज समवेयर देयर इन द इक्वेशन. वो है कहीं पे. अभी देखते हैं कहाँ पे है वो. तो अब हम क्या करेंगे. वी नो काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज हाफ mv स्क्वायर. वी नो वेरी वेल. या हाफ p स्क्वायर बाई m. दोनों पॉसिबिलिटी है. मतलब यहाँ मैंने मास मल्टीप्लाई कर दिया तो p स्क्वायर आ गया. इट मींस linear momentum can be written as 2mt and root of that. लिख सकते हैं ना. Can be right. So use Yes, sir. Yes, sir. p equal to root of 2m for different particle in this equation. So you will get 2my dy. p square है ना तो ये आ गया 2ma pa plus 2mb pb. सॉरी pb नहीं t सॉरी t. ये तो हमारा बट गया ना. t आ गया. दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग. दिस इज एक्चुअली p स्क्वायर इज 2mt. तो 2ma ta 2mb tb minus 2 p and pb. So that will give me 4 ma mb ta tb and cos of theta. ठीक है. So ty equal to 2 is already there. सभी में 2 है तो 2 हम इसको रिमूव कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे भी एक 2 है. ये जो 4 का रूट है ना ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा. 4 से 2 डिवाइड कर सकते हो तो वी कैन राइट दिस एज MA MY TA plus MB MY TB minus 2 divided by MY root of MA MB TA TB cos of theta. यहां तक आ गए हम.
अब थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो जाते हैं. सो टी वाई इज हियर. और बार बार मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हम टी वाई का भी टर्म है और टी ए और टी बी का भी टर्म है, और अल्टीमेटली हमें टी ओ टी बी और क्यू के टर्म्स में सब कुछ चाहिए. वी डोंट वांट टी वाई ऑल्सो. सो वी नो दिस इक्वेशन क्यू. वी नो दैट Q is equal to Ty plus Tb minus Ta. स्टार्टिंग में लिखा था ना, जहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन लिखा है, वहां पे हमने Q डिफाइन किया है जो मासेस से डिफाइंड है, और दैट इज आल्सो इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी टर्म्स आल्सो. ठीक है. सो वी कैन राइट इट हियर. कैन राइट Ty here, and we have extra Tb and minus T. Sorry. So the final equation will be 1 plus mb my tb. ये रहा है tb का टर्म. ty में m by by mb by my है, और एक ये रहा, तो 1 plus mb by my आ गया. क्लियर. देर इज अ ta टर्म and there is a minus ta term. So this minus 1, or you can write minus of 1 minus ma by my ta. Is it clear? This is clear to you? Yes, sir. Okay. Then we have 2my, क्योंकि और कॉम्प्लिकेशन अभी आएगा. अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन आया नहीं है. अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, अभी तो इक्वेशन ही आया हमारे पास. इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. सो दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, एंड यू नीड टू डू 2-3 टाइम्स कि वो करके देखें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आई विल राइट डायरेक्टली, बट यू नीड टू डू. आज से जब तक नहीं करोगे ना कि ये नंबर मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है नहीं आ रहा है, बट दैट इज नॉट डिफिकल्ट. आई ऑलवेज से कि इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज मोर complicated. Cumbersome ज़्यादा है, difficult नहीं है. Okay, so this is the equation which is finally we can write Q equal to this one. Our aim was find TB. ये हमारा एम है कि TB की वैल्यू क्या है, यानी आउटगोइंग एनर्जी, आउटगोइंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है. दैट इज आवर एम. इफ यू नो द रेस्ट ऑफ द थिंग, यानी इनकमिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कोई मास डिफेक्ट हुआ है तो वो कितना था, मासेस क्या है, सब कुछ आपको पता है. You can easily predict what is the value of TB when you are doing the reaction. So this is our aim. And this equation which you get, you have to solve for TB. So आपका equation जो है ना, that you have to solve for TB. तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक बार जरा मैं इसको फिर से ऑर्डर वे में लिख देता हूँ. I will take everything one side and 0 on the other side. तो Q भी मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो यह माइनस Q आ जाएगा. ठीक है. अगर मैं Q इधर लेके आता हूँ तो माइनस Q आ जाएगा. और चलो मैं लिखता हूँ एक बार, देखते हैं कि आप उसे देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो. 1 plus mb y my tb. Then we have minus 2 my root of ma mb ta cos of theta root of tb. इसी इक्वेशन को लिखा है मैंने, यही टर्म लिखा है, बट टीबी को मैंने बाहर ले लिया है. ठीक है. उसके बाद द फाइनल टर्म which is minus, there is a bracket because this is minus, this term is minus, जिसमें कोई टीबी का टर्म नहीं है, और Q जिसमें कोई टीबी का टर्म है तो वो भी माइनस में, तो माइनस मैंने पुल आउट बाहर कर लिया. तो Q प्लस 1 माइनस ma my ब्रैकेट क्लोज ta, एंड दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो मैंने रिकलेक्ट करके इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, which is like a tb plus b root tb plus c equal to 0. A quadratic equation in root tb form. ax square plus bx plus c equal to 0.
ठीक है, इज इट क्लियर? एक्स स्क्वायर यानी टीबी, x means root tb, and there is no term of, this is a quadratic equation in terms of root tb, not tb, root tb, root of kinetic energy of outgoing particle. Is it clear? Yes, sir, clear. It means root tb will be equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a, where a you have to identify what is a is this one, b is this one, and c is this whole thing, including minus sign, here also including minus sign, that is b, क्योंकि प्लस में लिखा ना सब कुछ. तो a और b और c थोड़े से ट्रिकी हैं, एंड व्हाट इज नीडेड इज b स्क्वायर माइनस 4ac का टर्म निकालना है. तो b स्क्वायर माइनस 4ac and whole thing has to be divided by 2a also. So यहाँ तक हम छोड़ करके मेरे ख्याल से हम कल की क्लास में कर सकते हैं. इट इज नॉट डिफिकल्ट. आई होप कि अगर थोड़ा सा होमवर्क ये कर लो कि फाइनल इक्वेशन का टर्म निकाल लो, कि आपको इक्वेशन सिर्फ इस फॉर्म में लिख देना है, प्लस माइनस रहने दो, मतलब प्लस माइनस दोनों रहेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ ये टर्म निकालना है आपको, ये कितना है, और डिवाइड बाय 2a भी करना है. तो फाइनल इक्वेशन जो है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, जो मिनिमम पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उतना तक सिंप्लीफाई करके हम वहां से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन. अगर आप के पास इक्वेशन आ गया तो इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है, ये तो सोल्यूशन आ गया कि टीबी की वैल्यू ये होगी, बट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, क्योंकि उसमें मासेस भी हैं, टीए भी है और कोसाइन फैक्टर भी है. यू कैन सी द कोसाइन फैक्टर हियर, दिस वन. तो अगर कोसाइन फैक्टर है, इट मींस टीबी कॉस यानी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी अलग अलग एंगल पे अलग अलग एनर्जी के पार्टिकल हमें डिटेक्ट होंगे, और मासेस पे भी डिपेंड कर रहा है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है, इवन क्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, विच इज द whatever the defect you are getting after the reaction. Okay, so we will end here क्योंकि 56 हो गया. I will end here. 3 बज ही गए. तो कल यहाँ से हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, where we have to write the solution of root TB, and then we will discuss something, and then tomorrow I hope कि हम क्रॉस सेक्शन भी इंट्रोड्यूस करें और क्रॉस सेक्शन कर लेंगे. ठीक है, सो बाय बाय फॉर नाउ. And does the recording was there? Yes, recording was there. So अभी हम एंड करें, ठीक है, कल मिलते हैं. गुड आफ्टरनून सर. हाँ बोलो. गुड आफ्टरनून सर. नहीं, फिर से बोलो विकास, आपकी वॉइस नहीं आई क्लियर. सर गुड आफ्टरनून. ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ, अब कल हम यहाँ पे स्टार्ट करें. थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, लास्ट वाला देखना. आई विल शेयर द नोट्स बाय इवनिंग, कोशिश करूंगा कि ये मैं अपलोड कर दूं, तो एक बार जरा देखना उसको सॉल्व करके, भी है वहां से भी देख सकते हो. ठीक है, चलो, आई एम स्टॉपिंग द